Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Economatrix Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। So back to what I was saying. Could be us. Now today, class 8 students, we are again going to continue with chapter 10, direct and indirect variation. And today we are going to continue again with exercise 10.2, and today's part is part 4. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 3, I have shared the link at the end of the video. So do watch those parts, or you can check the playlist and watch it, so that your concept will be much more clear and it will help you to solve these sums more easily. Till our previous part from exercise 10.2 we did up to question number 3. Now today we are going to do question number 4. So let's get started. So question number 4, what it is telling? Rita had enough money. So with Rita there is enough money is there to buy 15 books. मतलब पैसा है, रुपया है उसके पास कि वो 15 तो बुक आराम से खरीद सके, ठीक है, फॉर ₹30 ईच। तो कितना पैसा है उसके पास वो हम लोग को निकालना है। तो व्हाट आई विल राइट आंसर, we will not do this sum how we did the previous one, okay, little bit differently we will do. So number of books, first I will write number of books. So number of books, Rita, okay, Rita had to buy. So how many? Now 15. And then what it is told? Cost of each book. Now each book means what? One book. Okay. So one book is how much? 30 rupees. Okay. So number of books, Rita has to buy 15 and cost of one book is 30 rupees. So from here we can easily get the total cost. Okay. Therefore total cost of how many books? 15 books. सो एक बुक का दाम 30 रुपीज है। सो 15 बुक का दाम, 15 बुक का दाम कितना होगा? ज्यादा होगा, और ज्यादा मतलब मल्टीप्लाई। सो ₹30 इंटू 15, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 क्रॉस, 3 5 15, 1 3 1 3 4, तो कितना आ गया? 450। सो to buy 15 books, Rita has to pay ₹450. That means ₹450 is with Rita. Okay, that's why it is told Rita had enough money. She has enough money to buy 15 book. Okay, so what we will write this one? This is only the money Rita has with her. So therefore, total money Rita had with her. तो कितना रुपया रीता के पास है? 450 रुपया। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? इफ द प्राइस ऑफ ईच बुक इंक्रीजेस, हर एक बुक का दाम बढ़ रहा है, और जैसे ही बढ़ेगा क्या हो रहा है? रिजल्टिंग इन अ टोटल कॉस्ट इंक्रीज ऑफ ₹45। सो टोटल कॉस्ट का, सपोज टोटल कॉस्ट हियर टू बाय 15 books, what is the total cost? 450. So total cost is increasing by how much rupees? 45. Okay. So now we will write that condition now. Okay. The price of each book, increases. Okay. हर एक बुक का दाम बढ़ रहा है। Resulting, see क्वेश्चन में लिखा है resulting in a total cost increase, total cost बढ़ जा रहा है, increase of ₹45। मतलब टोटल कॉस्ट बढ़ गया है। टोटल कॉस्ट पहले कितना था? ₹450, अभी बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? 45 रुपीज बढ़ गया है। तो क्या लिखेंगे? Therefore increased total cost of 15 books, 15 बुक का दाम, टोटल कॉस्ट, टोटल 15 बुक का दाम कितना हो गया? अभी पहले था
450 रुपया, अभी 45 रुपीज बढ़ गया है, तो कितना हो गया है ₹495। ठीक है, अभी दिस इज द इंक्रीज टोटल कॉस्ट। देन वन बुक का दाम कितना होगा? इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वन बुक। सो 15 बुक का दाम अभी 495 रुपीज है, तो एक बुक का दाम कम होगा, और कम मतलब मैंने सिखाया है 495 डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, समझ में आया? अभी इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलो डिवाइड करते हैं। इधर में 495 किससे डिवाइड करेंगे? 15 से। सो 15 3 is 45. So now 4 left, again 5, again it will come what? 15 3 is 45. तो आ गया, हर एक बुक का दाम कितना आ गया? 33 रुपीज। दैट मीन्स पहले था 30 रुपीज, अभी 33 रुपीज आ गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फॉर दैट आई एम रबिंग दिस रफ पोर्शन। ओके, नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू? वी विल राइट हियर। ओके, फ्रॉम हियर आई एम गोइंग। Okay, now see how many books can she buy now? अभी रीता कितना तो बुक खरीद सकता है। ठीक है, रीता के पास कितना रुपया है? 450 रुपीज है। अभी एक एक बुक का दाम कितना है? 33 रुपीज। तो ये टोटल मनी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ वन बुक, देन आई विल गेट हाउ मेनी बुक्स शी कैन बाय नाउ। सो व्हाट आई विल राइट? देयरफॉर नंबर ऑफ बुक्स Rita can buy, number of books Rita can buy now. It will be what? It will be what? This is the what? This is the cost of one book. Okay, and how much money Rita had? So Rita's total money. So total money Rita had with her. So total money Rita had with her। ठीक है, टोटल ऊपर में क्या होगा? टोटल मनी रीता हैड विथ हर डिवाइडेड बाय इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ वन बुक। ठीक है, तो टोटल मनी कितना है? ₹450, और हर एक बुक का दाम कितना है? ₹33। इसको डिवाइड कर देने से ही आ गया कितना तो बुक वो खरीद सकता है। रुपीस कैंसिल हो गया। तो डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो 33, सो 33 1 जा 33। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये डिवाइड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सो 5 और 3 सब्ट्रैक्ट करने से 2 आएगा, 4 और 3 सब्ट्रैक्ट करने से 1 आएगा, उसके बाद 0 विल कम डाउन। ओके, सो 33 क्लोजर टू 120, it will go with what? 3 3 3 is 9, 3 3 is 9, तो कितना आ गया? 99। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2 को काटेंगे, 1 बना देंगे, इधर में 10 हो जाएगा। 10 minus 9 1, 1 and 9 you cannot subtract, again you have to borrow, cut this one, make it 0, and this becomes 11, 11 minus 9 2। So this division, it is not fully divisible। Okay, so it is remainder is not coming 0, remainder is coming 21। That means 21 is still remaining with whom? With Rita। और वो कितना तो बुक खरीद सकता है? 13 books, because this is the portion। So आ गया हम लोग का एक तो आंसर। ठीक है, 13 books Rita can buy। Then next question, how much money will be left with her? Therefore money left with Rita, and that one will be okay, money left with Rita after, you can write like this also, after buying 13 books। वो तो 13 तो बुक खरीद लिया है। after buying 13 books, K is not looking so nice, so now after buying 13 books, so how much money is left? ₹21। तो ये आ गया आंसर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का सम, हम लोग का सॉल्यूशन। नाउ यू कैन फाइंड आउट दिस 21 रुपीज इन अनदर वे ऑल्सो।
that also let me show you. If I draw one line here, that also I will show you. Now, 13 books she is buying. So, and one book is what? 33 rupees. Okay. So, how much it is? So, 9, and then here 33. So, what you get? 9, 12, 1, 429. So, रीता के पास 450 रुपया है. So, 429 rupees का बुक खरीद लिया. तो कितना बचा है? 21 rupees. So, Rita has money left with her is what? 21. Like this also you can find out. But no need, you can find out in this way only. Which is the remainder. That's why I told you this division is very important. The remainder is only the money left with Rita. Clear? So nicely practice this sum. This is totally different sum. Okay, the way of solving is also totally different. Okay, now we will move on to the next question number 5. So what is question number 5? In a school camp, there was enough food for 8 students. So there was enough food. Food was there for how many students? 8 students for 30 days. Okay, then if 12 more students join, so और 12 students join कर रहे हैं स्कूल में. Okay, then for how many days will the food last? So इसको हम लोग जैसे पहले वाला सम कर रहे थे वैसे ही सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग चार्ट बना लेंगे. ठीक है, एक तो छोटा सा एक तो चार्ट बनाएंगे. ठीक है, ऐसा करके चार्ट बनाएंगे. और इधर में क्या है? फर्स्ट 8 स्टूडेंट्स वर देयर. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या लेंगे? x. सो कितना है स्टूडेंट्स? 8 है. ठीक है, एंड नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज. ओके, हाउ मेनी डेज आर देयर? सो 30 डेज. ओके, नाउ 12 मोर स्टूडेंट्स ज्वाइन. सो पहले 8 था, अभी 12 मोर ज्वाइन कर रहा है, तो कितना हो जा रहा है? 20. सो 20 स्टूडेंट्स. व्हाई? बिकॉज 12 प्लस 8 इज 20. Then for how many days will the food last? So you have to find out this one. Okay, this thing you have to find out. So let us put this one as y. Clear? And we have taken the number of days as y. Clear? Number of days as y. So here what I can write? When, okay, when what? When the students, when the number of students increases, so number of students is increasing, then the food will last for lesser number of days. Lesser number of days. See, when the number of students increases, then the food will last for lesser number of days. क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट होगा तो वो फूड कम दिन चलेगा. ठीक है, सो when there was 8 students, it is 30 days. Okay, and when it is 20 students, obviously it will be not 30 days, it will be less. So you see here number of students are increasing, but number of days are what? Decreasing. So it is a case of inverse variation. So this is only telling it is a case of inverse variation. And inverse variation already I have taught you. What is the formula? x1 into y1 equal to x2 into y2. That means the product, this product of two quantities. Okay, this one again product of these two quantities, they will be what? Equal quantities, commodities. Okay, so x1 and y1, if you multiply, that will be equal to x2 into y2. Okay, so this is the case. So I have to find out this one. So what I can write? I can write after this by the problem. Okay, so after that I will write this only. This is the inverse variation. This is only the inverse variation, the formula. So what I will write here? 8 into 30 is equal to 20 into y.
नाउ मैं पूरा उल्टा कर दे रहा हूं, ठीक है, और नहीं तो नहीं करने से भी होगा। 8 इंटू 30, अभी 20 इंटू है, इधर में आने से क्या होगा, डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू वाई, वाई इज लेफ्ट। आफ्टर दिस, ओके, let me do it here. Now I can cancel 0, 0. 2 ones are 2, 2 fours are 8. So what is that? 4 into 3. 4 into 3 is equal to y. So 12 is equal to y. Now y is equal to 12. Okay. So I got y. कितना दिन food last होगा? 12 days. Okay. So then for how many days will the food last? Hence the food will last. Let me rub this part. The food will last for 12 days. ठीक है, देखो इधर में 0 0 कट हो गया, 2 बचा था, 2 4s are 8 और 4 into 3 12. Hence the food will last for 12 days. और ये आ गया हम लोगों का आंसर। Now let us come to question number 6. So what it is telling in question number 6? A man drives a car. So एक आदमी कार ड्राइविंग कर रहा है at a speed of 60 kilometer per hour to reach a place in 6 hours. That means here speed is given and here time is given. Okay. So 60 kilometer हर एक घंटा में वो जा रहा है स्पीड उसका, और कितना घंटा में वो एक तो जगह से और एक तो जगह पहुंच जा रहा है, 6 hours में. So for this we will do same way only like the previous one. So first we will draw one chart, okay, or a table we say, okay, and we will write like this, okay. So speed is given, speed, और speed किसमें है, किलोमीटर पर आवर, ओके, और ये स्पीड को मैं क्या लूंगा, x ले लेता हूं, ठीक है. तो स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम, तो टाइम क्या है, टाइम भी आवर में है, ठीक है. तो इसको मैं y ले लेता हूं, ठीक है. तो टाइम कितना ले रहा है, वो 6 घंटा ले रहा है, ठीक है. इफ ही ड्राइव्स द कार एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, अभी वो क्या हो गया, 60 किलोमीटर से 45 किलोमीटर पर घंटा, ओके, एक घंटा में 45 किलोमीटर जा रहे हैं. तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर हिम टू कवर द सेम डिस्टेंस. सो जब स्पीड 60 था तो 6 घंटा में पहुंच जा रहा है, अभी स्पीड कम कर दिया, अगर स्पीड कम कर देगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस थिंग, ओके. सो दिस वन व्हाट वी विल टेक एज y. Clear? Now you see speed is decreasing, okay. So when speed decreases time will be taken more. पहले 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड था, टाइम 6 घंटा, अभी स्पीड कम हो गया मगर तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है. कम स्पीड मतलब ज्यादा टाइम. So it is what? It is inversely related. So what we will write? When the speed, okay, when the speed क्या है, मैंने x लिया है, तुम ऐसा भी लिख सकते हो, पिछले वाला सम में भी ऐसा कर सकते हो. So when the speed, that is x, okay, of the car decreases, so इधर में decrease हो रहा है, okay, then the time taken, तो time taken क्या होगा, ये है y, will be, okay, will be more. Understanding or no? When the speed of the car decreases, then the time taken will be more, okay, to cover the same distance, okay. Time taken will to cover the same distance. So अगर speed कम होगा तो the time taken will be more, okay, or will increase also we can write. So this is a case of inverse variation. So ये inverse variation का केस है, ठीक है, समझ गया. अभी इसके बाद हम लोग इधर करेंगे सेम वे,
Okay, so you can write by the problem or as per question or according to the question also you can write. So what you will write? Inverse variation क्या बोला है मैंने? The product, okay, x1 into y1 is equal to x2 into y2. The product is always constant. Okay, so what I will write here? 60 into 6 equal to 45 into 5. अच्छा से नहीं लिखा. 45 into y. So now 60 into 6 और ये 45 ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना रहेगा? इधर में y रहेगा. अभी हम लोग इसको काटेंगे 5 से. 5 9s are 45 and now this one I will cut. 5 1s are 5, 1 extra, so it goes there 10. So 5 2s are 10. Okay, now again we can cut 3. See, 3 2s are 6, 3 3s are 9. Okay, again I can cut. See here, upside it is 12. Okay, downside it is 3. 3 1s are 3, 3 4s are 12. So what you get? 4 into 2 is equal to y. तो कितना आ गया? 8 is equal to y. So y is equal to 8. So the person is taking 8 hours. Understanding? When he decreases the speed from 60 to 45, he is taking more time, 8 hours. So how we will write? We will write hence, comma. Okay, how long would it take, okay, for him to cover the same distance? So hence the, what is talking? The man will take, hence the man will take 8 hours, okay, to cover the same distance. ऐसा करके लिखने से अच्छा लगता है. ठीक है, अगर तुम नहीं लिख सकते, सिंपली तुम लिख दोगे टाइम, तो वो भी करेक्ट है. ठीक है, hence the man will take 8 hours to cover the same distance. Okay, when the speed, you can write more also, when the speed is 45 kilometer per hour. Okay, you can write the same distance when the speed is decreased to 45 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ऐसा भी तुम लोग लिख सकते हो. तो आंसर क्या होगा? 8 hours is the answer. So I hope question number 4 5 6 you have understood nicely. So practice these things. Okay, and ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.